Assalamu alaikum everyone. I welcome you all for today's session on careers in law and judiciary. Before we begin today's session, I would like to share a few snippets on what AMP is about. AMP stands for Association of Muslim Professionals. AMP is registered not only in India but USA, UK and Australia as a non-profit organization. And we have completed 14 years in serving our community in the field of education, employment and empowerment. AMP has a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. Its mission is to empower the underprivileged for the greater benefits of the society in general and region as a whole. There are many flagship projects running under AMP. A few of them are the Employment Assistance Cell, wherein through amppowerjobs.com, we have a portal where the seekers and the job givers can meet at a common point. Along with that, we do have job drive, wherein newly graduates can go and get the job. Secondly, we have the employability training program, wherein we not only help them seek the job, but we also train them when it comes to resume, when it comes to presentation, along with skill training programs for them to get the job easier. Next is the AMP Zakat Fund, wherein the indiazakat.com, again a portal where the seekers and the givers unite. Next is a national talent search through the Champion and AMP mobile app, wherein we search for the talents throughout India and give them scholarships and other prizes. Next is the indiamentors.com and the school development program, wherein we help with the career lectures, teacher training, student development. Along with that, we have AMP web talks and webinars on various topics and internship programs. AMP flagship projects also provide higher education scholarship guidance, international education guidance, Education Excellence Award, Social Excellence Award. So far, the achievements of AMP that in the employment assistance cells, 30,000 plus candidates have been employed. In the amppowerjobs.com, 61,000 candidates have registered. In the National Talent Search, 1,16,000 students registered. The indiamentors.com, wherein we have 266 plus events. AMP has honored 400 plus influential educators. They have given like 2,300 plus NGOs were nominated for the Social Excellence Award. 100 plus higher education scholarships have been given. And in the school development programs, 2.81 lakh students have benefited. And through AMP Zakat Fund, 10,000 plus students and professionals have benefited through it. In the internship program, around 700 plus internship registrations just in the year of 2021 alone. Again, in the Zakat Fund, we have raised up to 4.7 crores. And we also help in orphan education. Started an Adopt an Orphan campaign, wherein 41 orphans have been adopted so far. We also have the Feed the Poor campaign, where 5,000 plus needy families were served, and O2 for All campaign. During a recent COVID times, this campaign was held. AMP has an on-ground presence of 140 plus active chapters spread across 26 states and 20 countries. We also have an online presence with Insta, Facebook, WhatsApp, LinkedIn. You can support AMP by being volunteer and participate in our projects, by even a word of mouth, by letting your neighbors, your colleagues, your friends know about AMP, how they can seek benefit from it. You can become our partners for conducting various activities. You can be a sponsor by sponsoring our projects and activities, by a donor by giving the zakat, helping in the infrastructure of our projects, by being the patron members. Like if you are experienced in your certain field,
then come back and give back to the society. To join AMP, you can visit www.ampindia.org/joinamp. Today's session is about career in law and judiciary. And today's speaker is Mohammed Rafiq. He is an engineer and an MBA, also a postgraduate program from National Law School of Indian University, Bangalore. He has worked in techno-legal, technical, and management areas for more than 2 decades. Currently, he works as a consultant in a technology area. Hearty welcome, Mohammed Rafiq sir, and thank you for taking time from your professional life to help the students whom we have now who are looking for an option for a career in law and judiciary. Thank you very much, and assalamu alaikum and good evening to one and all. Thanks all for taking your time and joining this session. And I'm sure I can promise that the next 45 minutes to 1 hour that you're going to spend with me, inshallah, will give you an insight into what is there that is there in the law career. And I'm sure for people who want to make a choice of law, they would be able to appreciate as to what is there that is waiting for their picking up the program. I have one request. The request to all the participants, specifically the student community and the people who are aspiring to get into law, is to carry a book or something, and a pen with you, so that you are able to pick up few important tips that I'm going to share with you. I'm sure it's very difficult to remember what is going to be spoken for next 45 minutes or so. So, and also the second request is if you have your parents with you, it would be great. Please do invite them, because the choice of the career, at least in India, is not independent. Many a times it is the parents or your elder brother or your sister or your uncle or somebody also participates in your choosing of the career. So it is worthwhile if they are also part of the discussion and they are able to also understand as to what is there in law as a career. And I'm sure as we go, just wanted to check how would we be proceeding. I mean, are we going to take up the questions at the end of the presentation? How is it going to be? If I can know, so that I can plan the discussions accordingly. Yes, sir. The questions will be taken at the end of the session. Okay. That's great. So let us get started, friends. I hope all of you have the paraphernalia that is required to capture the information. And let me pin myself so that. Okay, and in case you people have some problem in terms of audio, video, or something, do raise your hand or put it in the chat box, so that I can also have a look at it. And then if there is anything, then I can take care of it. Okay. Thank you. So let us get started. I mean, all those people who are raising their hands, I suggest it is worthwhile to put your questions, if all there are, in the Q&A or in the chat box. We may be able to take it up in the later part of the discussion. Okay, the agenda is going to be like this. Initially, I'm going to introduce you about the law, that is the legal fraternity. And then we will talk about the legal education, what it means, and what is there that needs to be picked up. And then thirdly, we will see important aspect as to what is there in terms of careers, in the law education. And the third thing is we will see, silver lining, some of the achievements, that gives us real motivation as to why somebody has to pick up law. Okay. So this is one picture. I'm sure most of you would be aware. This is nothing but a scale or a pan, weighing scale or something like that, which is used precisely now for weighing the gold and the precious items. Otherwise, earlier it used to be used even for vegetables also. But now I'm sure the digital scales are being used. Now, this scale represents two things. One is
On the left side, you see rights, and the other side is the duties. I mean, is it okay if I speak only in English, or am I supposed to put some Urdu words also in between for the ease of understanding? Just wanted to make sure if everybody is comfortable with English alone, or do you want me to speak both? Yes, sir, that would be great. If you could include just, a few lines in Few English. words, okay. बेहतर. So we have two things. एक जगह होता है rights. Rights मतलब होता है हक, और दूसरी तरफ होती है duties. Duties मतलब your responsibilities. Rights जो होते हैं जो मुझे मिलना चाहिए, duties वो होती हैं जो मुझे करना चाहिए होता है. दुनिया का बैलेंस जो चलता है वो rights and duties बैलेंस करने से चलता है. But many a times it so happens, if somebody comes and asks you today as to what are the problems that you're facing, you will start talking about everything. Roads kharab hai, electricity nahi hai, pani theek se nahi aata hai, so many problems. Bus mein bheed hai, train mein bheed hai, reservation milta nahi hai. There are so many things. These are all things that I should and you should get, and these are all our rights being the citizens of this country. Now the second part is हमारी duties हैं. Duties मतलब हमारी जिम्मेदारियां हैं. हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? अगर किसी को पूछा जाए तो आई एम श्योर you will not be able to count more than 4 or 5 or 10 max to max. तो ये वाली प्रॉब्लम होती है कि जहां पे जो है there is an imbalance always. So law is a fraternity, or law is a specialization which tries to balance both of these. If it is not there, then there's going to be a lot of confusion in the society. So law जो होता है, this is nothing but study of balancing of rights and duties. Okay, let us move forward. I'm sure most of you would be interested in listening to a story. All right, I'm sure everybody is interested. Let me see how many of you are saying yes. Can you please type yes if you are interested in a story? Okay, great. Okay, Amatullah, Umair, Mohammed Mizan, very good. Okay, fine. Let me share a story. Very important story. This story जो है almost 100 years पुरानी है, but it is very interesting and please listen to it very attentively. ये काफी काम की चीज है. ये जो स्टोरी है एक बंदे की है जो आपकी तरह बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, और आज से कुछ साल पहले, मे भी 50 साल 100 साल पहले, इफ यू हैव योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर पेरेंट्स, यू कैन आस्क देम. पहले क्या होता था, इफ द स्टूडेंट वाज वेरी गुड, ही यूज्ड टू गेट डबल प्रमोशन. मतलब पहली से तीसरी को चला जाता था, तीसरी से पांचवी को चला जाता था. सो इट यूज्ड टू हैपन लाइक दैट. सो दिस स्टूडेंट वाज सो गुड दैट ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन एंड लॉ almost 100 years back. You will get to know what it is. So at the age of 17, जब कोर्ट में गया तो कोर्ट में बताया गया कि भाई योर एज इज वेरी लो, यू आर ओनली 17 years, यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज अ एडवोकेट, यू नीड टू बी एटलीस्ट 21 years old. यू नो व्हाट हैपेंड? यहाँ पे वही है ड्यूटीज वर्सेस राइट्स का. उसने बोला मेरी ड्यूटी थी पढ़ाई करने की, डिग्री हासिल करने की, मैंने डिग्री हासिल कर ली है, बट अभी मेरा जो है राइट्स नहीं मिल रहा है. मेरे राइट्स क्या है? मुझे प्रैक्टिस करने की इजाजत होनी चाहिए. क्योंकि इसको नहीं मिला, तो द फर्स्ट केस ही सॉर्ट ऑफ फॉट वाज फॉर हिज ओन सेक. तो उससे क्या हुआ? he fought that case and then he was allowed to participate and practice the as an advocate at the age of 17. उसके बाद क्या हुआ? He migrated from place in Pakistan to India at the age of 25, and he became the lawyer at Mumbai High Court that time, and he started practicing it from Mumbai. And there again he fought for all the migrants को जो है वो second grade citizen समझते थे, जैसे आज बांग्लादेशी, रोहिंग्यास, नेपाली, आई डोंट नो, या श्रीलंकन्स के बारे में जैसे बोलते हैं. उस जमाने में अगर कोई पाकिस्तान से इंडिया आता था या बांग्लादेश से इंडिया आता था तो दे यूज्ड टू गेट इल ट्रीटमेंट. तो इसने मुंबई हाई कोर्ट में वो केस लड़ा and he won that case also. And he is one of the most respected and highly paid lawyer of this country till he died at the age of 92. क्या आप समझ सकते हैं कितने साल की प्रैक्टिस है? He practiced law for 75 years non-stop, and he was one of the highly paid lawyer in the country.
You know, I read in one of the newspapers, probably you can also check it in Google, that he was paid 22 lakh rupees for one appearance in the Delhi High Court for Delhi Chief Minister, current Chief Minister Arvind Kejriwal. His name was Ram Jake Milani. Isn't it very interesting, friends? 75 years non-stop legal practice. Now, उसने ऐसे case लड़े हैं. Probably you can spend some time, go back home, and then do a little bit of research. You will get to know all the cases that he has. And I'm sure it will inspire many of you to pick up law, because if you have gems like this, if somebody like Ram Jethmalani can do, you can do, I can do, anybody else also can do, and in fact, we can do more than what he has done. Okay, this was the icebreaker in terms of the information about somebody who has done great things in the past. Okay, दूसरी चीज जो है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, again I go by little bit of stories, because देखिए, how many years did the Britishers rule this country? Almost 200 years. 200 years में इतने सारे wars, battles हुए, मराठास के साथ, टीपू सुल्तान के साथ, निजाम के साथ, पता नहीं कितनों के साथ लड़ाइयाँ हुई. But Britishers could not leave this country and go, because every time Britishers used to defeat the Indian rulers. But you know what happened? Later on, in the later part of the 20th century, people started getting educated. And we had a big chunk of advocates and lawyers. This is Saifuddin Kichlu tha, who was nothing but founder of Jamia Millia Islamia. Mahatma Gandhi was a barrister, again studied from UK. Sardar Vallabhbhai Patel, who was the first home minister, was also a law student. Rajendra Prasad, the first president of this country, also was a law graduate. Jawaharlal Nehru was a law graduate. His father Motilal Nehru was a law graduate. Muhammad Ali Jinnah, first Prime Minister of Pakistan, was the graduate of law. B.R. Ambedkar, first law minister, was a law graduate. Asif Ali, first ambassador to the United States. R. Venkataraman, हमारे past president रहे हैं. He was also a law student. Badruddin Tayyib, first Indian practiced Mumbai High Court, also was the law graduate. So you can see there are huge number of people who are coming from the law background, and they were the forefront in terms of fighting for Indian freedom. So I'm sure people who feel that there is a difference between rights and duties, and somebody is there to fight the for the cause, it is the lawyers. चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं. यहाँ पे एजुकेशन के बारे में देखते हैं. व्हाट इज इट रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इनटू लॉ एजुकेशन, एंड व्हाट इट मींस टू कंप्लीट लॉ एजुकेशन. टिपिकली क्या होता है, यू डू योर डिग्री, एनी डिग्री फॉर दैट मैटर, बीबीए, बीकॉम, बीटेक, एमबीए, एमसीए, या फिर आप इवन मेडिकल डॉक्टर आल्सो, एनी डिग्री फॉर दैट मैटर कैन बी डन, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट डिग्री यू हैव टू डू 3 years of LLB. If you do 3 years of LLB separately, then you become a lawyer. The second track is, which is very Humair Ansari has been raising hands. Is there anything that you want to ask Humair? You can put it on the chat. I will see it later. Is that okay? Yes, sir, that would be okay. Okay. So now the next thing is, if somebody wants to go into fast track, टिपिकली क्या होता है, 3 years का डिग्री होता है, उसके बाद 3 years का LLB होता है, टोटली 6 years आफ्टर 12th क्लास के पढ़ाई करनी पड़ती है फॉर समबडी टू बिकम अ लॉयर. बट इफ यू वांट टू गेट इनटू फास्ट ट्रैक, आपको जल्दी करना है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड LLB, BA plus LLB, BBA, LLB, BCom, LLB, BSc, LLB, या जो भी है, आप डिग्री और LLB जो है कंबाइंड मिलता है. So you will save 1 year. So I'm sure most of you would be noting it down somewhere, that you have two options. If you have already done your degree, you can do LLB. If you have not done your degree, and if you are interested in doing law, you can club both the degrees together and do an integrated degree. In 5 years, you will become a lawyer. Okay. The next one is, after degree also, you can do 1 year of post graduation, which is called as LLM. तो वो जो है स्पेसिफिकली लॉ के लिए ही होता है. पीपल हु हैव डन LLB कैन डू मास्टर्स इन LLB by doing 1 more year of study called as LLM. Fine. So these are the educational options that are available for you all friends. Whatever suits you, you can pick it up. Okay. अभी देखते हैं
who is a lawyer and who is a advocate. I mean, these two things are different, so please pay attention. You will get to know the small difference. आप जब एलएलबी की डिग्री करते हैं, ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी, आपने 6 साल का प्रोग्राम आफ्टर 12th किया है या 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है आफ्टर 12th, सो देन व्हाट यू गेट इज यू गेट अ लॉयर डिग्री. तो ये लॉयर डिग्री से जो है आपको कोर्ट में आपको प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा. अगर आपको कोर्ट में प्रैक्टिस करना है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है, जिसको एआईबीई होता है कहते हैं, एंड दैट इज कंडक्टेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया. ये एग्जाम जो है हर साल कंडक्ट होता है, एंड इफ समबडी पासेस दिस एग्जाम तो ही बिकम्स फ्रॉम अ लॉयर ही बिकम्स एन एडवोकेट. एडवोकेट को जो है he can go and practice in the court. Lawyer cannot practice in the court. ये एग्जाम जो होता है ये नॉन कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इतने रैंक के अंदर आना है, ऐसा नहीं है. इसका कुछ रिक्वायरमेंट होता है. अगर 50-60% आपको पास मार्क्स स्कोर करना है, अगर आपने पास स्कोर कर लिया है then you become a advocate. And with this qualification that you get from All India Bar exam जो BCI conduct करती है, वो करने के बाद में you can study anywhere and you can practice anywhere. There is no restriction in terms of your practice. So you can practice anywhere across India, any court. तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट मिलेगा. दैट प्रैक्टिस वाला सर्टिफिकेट इज एनफ फॉर यू टू गो एंड प्रैक्टिस एनीवेयर यू वांट टू प्रैक्टिस. फाइन फ्रेंड्स, तो अभी आपने क्या क्या चीजें मालूम की. एक तो आपको एजुकेशन में क्या होना चाहिए वो पता लगा, दूसरा आपको लॉयर से एडवोकेट बनने के लिए क्या करना है वो भी मैंने बता दिया. ओके, अब नेक्स्ट चीज है सर, वेयर डू आई स्टडी लॉ. मतलब एलएलबी कहाँ से करूं या डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री कहाँ से करूं. तो आपके लिए जो है हमारे कंट्री में इंडिया में वी हैव मोर देन 1500 इंस्टीट्यूशंस गिविंग यू undergraduate and postgraduate options to study law. अच्छा, हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे. तो ब्रॉडली क्लासिफाई इस तरह करेंगे कि पहले जो है वहां इंडिया में कुछ स्कूल्स के नाम होते हैं, उनको बोलते हैं नेशनल लॉ स्कूल्स. ये इंडिया के प्रीमियर स्कूल्स हैं. जैसे आईआईटी में, इंजीनियरिंग में आईआईटी होती है अगर आपने नाम सुना होगा. तो इसी तरह लॉ के अंदर जो है नेशनल लॉ स्कूल सबसे ऊंची होती हैं, तो वहां से आप कर सकते हैं. या फिर आप गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस होते हैं, अगर आप कोई भी सिटी में पढ़ रहे हैं या बड़े शहर में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको गवर्नमेंट लॉ कॉलेजेस होंगी जहां से आप लॉ कर सकते हैं. Then the third option is you can study law from the private colleges also. So you have 1500 institutions from where you can study law. Okay. Now national law school जो ये प्रीमियम लॉ स्कूल्स हैं, ये इंडिया में 22 हैं. They are spread all over the country. Like one of the law schools where I studied, if you had heard my introduction. So I have also done one of the programs in National Law School in Bangalore, which is one of the premier institution. तो National Law School Bangalore है, नालसार बोल के हैदराबाद में है. Then you have National Law Institution University in Bhopal, West Bengal National University, National Law University Jodhpur, गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी गांधीनगर. तो ये कुछ मैंने सिलेक्टेड नेशनल यूनिवर्सिटीज बताए. अदरवाइज देयर आर अराउंड 22 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर द कंट्री. इसके अलावा नेशनल लॉ कॉलेजेस के अलावा देयर आर मेनी अदर कॉलेजेस आल्सो व्हिच आर गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस, जो मैंने पहले भी आपको बताया. तो इसके अंदर भी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में सबसे मशहूर एंड फेमस एंड वेरी गुड गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या है. एक तो है द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन दिल्ली, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज इन मुंबई. ये दो जो है ये प्रीमियम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट इंडिया के अंदर. इसके अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, जैसे सिम्बायोसिस है पुणे में है, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है सोनीपत हरियाणा में है, अमेठी लॉ स्कूल है जो दिल्ली में है. तो ये स्कूल्स जो हैं दे आर द बेस्ट क्रीम ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशन. इसके अलावा भी काफी जो है वो इंस्टीट्यूशंस होंगे आपके शहर में, आपके गांव में. मतलब इट डिपेंड करता है. बहुत सारे छोटे से विलेज में तो नहीं होगा, बट डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मली यू विल गेट टू हैव अ लॉ कॉलेज.
फाइन। तो हम लोगों ने एजुकेशन देखा, हमने लॉ स्कूल्स के बारे में देखा। अब जो है नेशनल लॉ स्कूल्स के जो एंट्रेंस होता है ये थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव होता है, जिसके अंदर जो है लास्ट ईयर के हिसाब से देयर अराउंड 70,000 स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड एंड रोट एन एग्जामिनेशन व्हिच इज रिटन आफ्टर 10+2। अगर आप 10 पास कर चुके हैं एंड इफ यू हैव पास्ड 10+2 that is your 12th class, then you are eligible to write a common entrance test which is called as CLAT। ये नेशनल लॉ स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, ये कॉमन होता है सारे के सारे 22 नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए एक ही टेस्ट होता है, ये अलग कोई टेस्ट अलग अलग नहीं होता, पूरे नेशनल लॉ स्कूल्स के लिए एक ही टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं क्लैट। इसके अलावा जो है ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं आईलेट, जो नेशनल लॉ स्कूल दिल्ली कंडक्ट करती है। ये थोड़े से दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जरूरत पड़ता है, इंक्लूडिंग दी दिल्ली कॉलेजेस, जो मैंने पहले भी बताया था, दिल्ली में जो गवर्नमेंट कॉलेज है वो बहुत ही फेमस है। सिम्बायोसिस जो है अलग से एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है, इसका नाम है सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट, उसको सेट बोलते हैं एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 3 सेंटर्स। सिम्बायोसिस के 3 सेंटर्स हैं, पुणे में है, नोएडा में है, हैदराबाद में है, तो ये तीनों के लिए कॉमन टेस्ट होता है। इसके अलावा जो है देयर इज अ टेस्ट कॉल्ड एज एलसैट। एलसैट में देयर आर अराउंड 20 इंस्टीट्यूशंस, नॉर्मली प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो ये टेस्ट यूज करते हैं एडमिशन के लिए। तो ये 20 इंस्टीट्यूशन का पूरा मिला के एक टेस्ट होता है, ये टेस्ट में अगर क्लियर कर जाते हैं तो वो 20 में से कोई भी इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन बेस्ड ऑन द रैंक हो जाएगा। अच्छा, आफ्टर ग्रेजुएशन जो है अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, जो LLM होता है, उसके लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होता है, DU LLB एंट्रेंस टेस्ट होता है एंड नेशनल लॉ स्कूल सॉरी ये जो है अगर मैंने बताया था टिपिकली जो है वो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए, जिस तरह मैंने ऊपर सारे बताए हैं क्लैट, आईलेट, सेट, लेल सेट, ये सारे के सारे जो है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए है, जो 12th पास स्टूडेंट के लिए होता है। अगर आप मान के चलिए अगर आप में से किसी ने ग्रेजुएशन कर लिया है, BA, BCom, BSc, जो भी आपने किया है एंड यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग लॉ व्हिच इज वेरी गुड, तो आपके लिए क्या ऑप्शन है, यू कैन राइट DU LLB एंट्रेंस टेस्ट होता है, ये लिखने से आपको जो है दिल्ली की कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। बैंगलोर की जो नेशनल लॉ स्कूल है उनके यहाँ प्रोविजन है, इवन इफ यू हैव कंप्लीटेड योर डिग्री you can write an entrance examination to get admission for 3 years of LLB का प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस वाज ऑन द एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो अभी जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे वो है क्लैट। क्लैट तो आपको मैंने जिस बताया 20 लॉ स्कूल्स के लिए एक बहुत ही कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, तो इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ पता होना चाहिए ना। तो क्लैट एंट्रेंस टेस्ट जो होता है तो वो हर साल जो है मई और जून के टाइम पे क्लैट जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन हेल्ड होता है। अभी इस साल का जो क्लैट है वो 22 जून को मतलब कंडक्ट होगा। ये जो टेस्ट होता है ये 2 घंटे का पेपर होता है, ये जो है बुक पेन एंड पेपर का पेन एंड पेपर का टेस्ट होता है, ये ऑनलाइन टेस्ट नहीं होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, यू हैव कॉमन एप्लीकेशन फॉर ऑल द 22 लॉ स्कूल्स, तो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, इसके लिए अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के लिए एंड दिस इज ओनली फॉर 22 नेशनल लॉ स्कूल्स। तो इसकी फीस जो है वो महंगी है, इट इज अराउंड 4,000 रुपीज एंड 3,500 रुपीज। 3,500 रुपीज रिजर्वेशन वालों के लिए है जो SC/ST है, और बाकी के लोगों के लिए 4,000 रुपए की फीस है। और जैसे मैंने बताया पिछले साल जो है अराउंड 70,000 पीपल हैड अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो वो जो टॉप वाले में अगर आपको आना है तो यू विल हैव टू गेट इनटू मे बी 100, 200 या 300 रैंक्स के अंदर जो है आपको लाना पड़ेगा इफ यू वांट टू गेट इनटू वेरी गुड इंस्टीट्यूशंस। अदरवाइज आल्सो इट इज वैलिड फॉर मेनी अदर एडमिशन इंस्टीट्यूशंस। ओके, क्लैट के एग्जामिनेशन का फॉर्मेट कैसे होता है ये भी मैं आपको बता के चलता हूँ। मैंने जैसे बताया ये 2 घंटे का टेस्ट होता है, इसके अंदर 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। देखिए इसमें एक चीज है, अगर करेक्ट होगा तो आपको 1 मार्क मिलेगा, अगर आपने गलती कर दी तो आपका 1/4 मार्क जो है वो नेगेटिव मार्किंग होता है, मतलब कम हो जाएगा।
टिपिकली इसमें क्या होता है, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज का 20% वेटेज होता है, करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज का 25% होता है, लीगल रीजनिंग का 25% होता है। देखिए लीगल रीजनिंग का मतलब ये नहीं आपको लॉ पता होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा जो लीगल बेस्ड होगा। लीगल मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आप रोड पे जा रहे हैं, आप देख रहे हैं सिग्नल बत्ती जो है वो रेड है, बट देयर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड। शुड आई स्टॉप और शुड आई गो? बिकॉज देयर इज नो ट्रैफिक। मैं रात को 10 बजे आ रहा था, रोड पे देख रहा हूँ देयर इज नो ट्रैफिक, शुड आई स्टॉप और शुड आई गो? As per the legal requirement you should stop, but नॉर्मली लोग क्या समझते हैं, ट्रैफिक है नहीं तो फिर सिग्नल का क्या माने, तो लोग जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, तो probably that is wrong। तो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया। तो typically and then you will have logical reasoning which is nothing but your mathematical skills and then logic, वो भी वहां पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा and then you are supposed to answer based on that passage। आपको अलग से मतलब मेमोरी से कुछ लाने की जरूरत नहीं। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का 10% है, वेरिन मैथमेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, विच अगेन इज जनरल अरिथमेटिक होगा। इसमें कोई डिफिकल्ट एडवांस्ड मैथमेटिक्स नहीं होगा। इवन स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स बैकग्राउंड इन 11th एंड 12th शुड बी एबल टू राइट द टेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो वी हैव कवर्ड दी CLAT examination format also, and the other examinations also will be typically in the same format जो मैंने बताया, LSET हो, सेट एग्जाम हो, सिम्बायोसिस का and all that, they also typically have the same format। ओके, ये वाला पार्ट जो है आपके बहुत ही काम की वाली चीज है, वो ये है कि इसमें लॉ में आपके लिए क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। हम लोग उमूमन ये समझते हैं कि अगर कोई लॉ करता है तो उसको एडवोकेट बनना है, उसको लॉयर से एडवोकेट बनना है, दैट्स इट। ऐसा नहीं है। देयर आर मेनी 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 अपॉर्चुनिटीज। मैं जो लिस्ट कर रहा हूँ ये भी बहुत ही कम है, इनफैक्ट देयर आर मेनी मोर, बट टाइम का कंस्ट्रेंट है, इसके लिए मैंने काफी गिने चुने चीजों को जो है यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो एडवोकेट है, आप कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं। आप कोई लॉ फर्म ज्वाइन कर सकते हैं। लॉ फर्म में ज्वाइन करने का मतलब है बैक ऑफिस का काम करना है। एक ग्रुप जो है लॉयर्स की, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी होती है या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वैसे ही लॉ की भी कंपनी होती है, वहां पे जाके आप काम कर सकते हैं, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। You can be a legal counsel, like for example banks है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है। ये बैंक्स के अंदर जो है वो उनके अपने लॉयर्स रखते हैं जो कोर्ट में जाके कुछ केस नहीं लड़ते। वो लड़ने के लिए तो दूसरे लोग होते हैं, लेकिन केसेस को हैंडल कंपनी की तरफ से करने के लिए वी हैव समबडी कॉल्ड एज लीगल काउंसिल्स। उसके बाद में जो है यू मे हैव डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दिस आर अगेन गवर्नमेंट अपॉइंटेड लॉयर्स होते हैं जो केसेस को लड़ते हैं। उसके बाद में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म्स होती हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जो साइंस के डिस्कवरी होते हैं, नए नए चीजें बनाती हैं, अगर उसको कॉपी कर लिया जाए तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करें, तो उसके लिए जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला एक एरिया होता है लॉ के अंदर, उसकी हैंडलिंग के लिए जो है यू कैन वर्क इन दैट। इफ पीपल आर हैविंग साइंस बैकग्राउंड दे कैन मेक गुड यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। जैसे दोस्तों, जैसे मेडिकल के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है, कोई ब्रेन का स्पेशलिस्ट होता है, कोई स्किन का होता है, कोई बोन्स का होता है, इसी तरह लॉ के अंदर भी ये सारे स्पेशलाइजेशन हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप लीगल फैकल्टी बन सकते हैं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, एंड एनजीओज में काम कर सकते हैं। देयर आर मेनी स्मॉल स्मॉल एनजीओ, बच्चों के लिए काम करने वाले एनजीओज हैं, वुमेन्स के लिए काम करने वाले एनजीओज हैं। एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके लिए जो है आप काम कर सकते हैं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड लीगल प्रोसेसिंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे आपने सुना होगा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। काफी लोग जो है बीपीओ में काम करने वाले हैं, अगर आप सिटीज में हो तो आपने सुना होगा के लोग जो है वो बीपीओ में काम करते हैं। तो वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देन यू कैन बी एसोसिएटेड विद मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह के लिए जो है आप काम कर सकते हैं विद लॉ बैकग्राउंड। इसके अलावा आप टैक्स लॉ कर सकते हैं, भले वो इनकम टैक्स लॉ हो या फिर कमर्शियल टैक्स हो, वो लॉ के रिलेटेड में आप काम कर सकते हैं। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, देखिए आज के दिन में क्या है, वी विल सी लेटर ऑन, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट जस्टिस फ्रॉम द कोर्ट बिकॉज इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम।
तो उसके लिए अलग से एक सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे मीडिएशन होता है, जहाँ पे लोग जो है जाके अपना दुख दर्द सुनाते हैं। जैसे अगर विलेजेस में आपने देखा होगा पंचायत होती है, पंचायत इज नथिंग बट एन ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला एक फैसिलिटी है जहाँ पे लोग जाके अपने प्रॉब्लम्स को हल कर लेते हैं। साइबर लॉ है, आपने सुना होगा सोशल मीडिया में इतना सारा काम होता है, बैंक्स में हैकिंग होती है एंड ऑल दैट, तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, जो मैंने भी स्पेशलाइजेशन किया है, वो साइबर लॉ रिलेटेड है। देन प्राइवेसी लॉ है, प्राइवेसी लॉ के अंदर अगेन जो है आपका डेटा कहीं और पड़ा हुआ है, दैट डेटा शुड नॉट बी मिसयूज्ड, तो उसके लिए देयर आर समथिंग कॉल्ड एज प्राइवेसी लॉ। जुडिशियल क्लर्कशिप होती है, ये कोर्ट के अंदर नौकरी मिलती है इफ यू हैव लीगल बैकग्राउंड। देन यू हैव ओथ कमिश्नर, जैसे नोटरी आपने सुना होगा, जो है ओथ लेते हैं, जो एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, तो वो वाला काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, मैंने शुरू में ही आपको इतने सारे लिस्ट बताए, गांधी हो, नेहरू हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, मतलब ऑल दिस पीपल वर इन पॉलिटिक्स बट दे वर ऑल फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। आप कंपनी सेक्रेटरी हो सकते हैं, ये भी एक पोजीशन होता है कंपनीज के अंदर, ये मैंडेटरी होता है, तो ये वाले में भी आप जो है लॉ करने के बाद में नौकरी कर सकते हैं। जुडिशियल सर्विसेज है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। जुडिशियल सर्विसेज में क्या होता है, आप जज बन सकते हैं। जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो लॉ का बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपको एलएलबी एलएलएम या जो भी है आपको करना ही होगा, ओनली देन यू कैन बिकम जज इन एनी ऑफ द कोर्ट्स। उसके बाद जज एडवोकेट जनरल वाली भी पोस्ट होती है, ये आर्मी के अंदर होती है, विच इज अगेन यू नो समथिंग वेरी वेरी स्पेशलाइजेशन, बिकॉज उनके लॉ जो है अलग होते हैं, कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, तो उसके लिए ये अलग सा एरिया होता है। फाइन फ्रेंड, तो ये जो मैंने बताया है, ये 15-20 है जो मैंने लिस्ट किया, इसके अलावा देयर आर मेनी, सो डोंट बी अंडर द इंप्रेशन दैट लॉ का मतलब सिर्फ दो ही है, या तो आप लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, या फिर आप जज बनेंगे, ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कोर्ट के बाहर है। कोर्ट में आपने जैसे देखा होगा, वी हैव ओनली डिस्कस टू थिंग्स, one is the advocate, another one is the judicial services. These are only two things that you do in the court, rest all is outside the court. ओके, अभी मैं आपके साथ जो है कुछ इंपॉर्टेंट आइटम शेयर करूंगा, एंड आई एम श्योर यू विल बी थ्रिल्ड टू नो क्या क्या होगा, मतलब क्या है सिचुएशन, हालात बाहर की। कुछ चीजें जो है आपको बहुत ही दुखी कर देंगी, इसलिए कि हमारा सिचुएशन, हमारे जो लीगल फ्रेटर्निटी है या लीगल सिस्टम है, ये काफी कमजोर है, और इसमें जो है काफी स्कोप है मेरा और आपका जाके कुछ करने का। सबसे पहले देखिए, हमारे यहाँ जो केसेस हैं, हमारे यहाँ 4.7 करोड़ केसेस जो है वो अभी तक पेंडिंग है। जो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में 1.1 लाख केसेस जो है 30 साल से पुराने हैं। हाई कोर्ट में 72,000 केसेस 30 साल से पुराने हैं। और ये जो आपको 4.7 करोड़ है, ये सारे अलग अलग कोर्ट्स से मिला के हैं। तो इंडिया में आज के दिन, ये मई 2022 का डेटा है, करीब करीब 5 करोड़ केसेस अभी हमारे कोर्ट्स पे लड़े जा रहे हैं, जिसका कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। ओके, हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर जो है, जो वेकेंट पोजीशन है जजेस की, वो इस तरह है। सब सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ 5 अभी भी वेकेंट, 33 जजेस हैं, उसके अंदर जो है 5 सीट्स आज भी वेकेंट। हाई कोर्ट में 411 स्लॉट्स जो है जजेस के वेकेंट है, और उससे नीचे वाले कोर्ट्स में जो है 5,000 5,500 अप्रोक्सीमेटली पोजीशंस जो है वो कोर्ट्स के अंदर खाली है। ये क्यों खाली है भाई? लोग अवेलेबल नहीं है, अच्छे जजेस अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए फैसिलिटी है, मेरे और आपके लिए जो है ये एक अपॉर्चुनिटी है, अगर इसका हम भरपूर भरपूर फायदा उठाना चाहते हैं। देखिए, ये आज की बात है, आज से 5 साल की बात मैं नहीं बता सकता जब आप लोग अवेलेबल होंगे, बट आज से 10 साल या 20 साल पहले की भी अगर हालत देखें, जैसे मैंने ऊपर बताया है, 30 साल से जो केसेस चल रहे हैं वो करीब करीब 2 लाख के करीब केसेस ऐसे हैं जो 30 साल से चल रहे हैं, अभी तक उसका सोल्यूशन नहीं निकला है। वजह क्या है? या तो फिर जजेस नहीं है, या फिर कुछ काम नहीं हो पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। अब ये अनदर थिंग है जो आपको
दिला देगी। एंड इनफैक्ट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी टचिंग ऑल्सो। हमारे यहाँ जो है जेल्स में जो है काफी कैदी हैं। कैदी देखिए 2018, 2019, 2020 का मैंने डेटा डाला हुआ है। अब फॉर एग्जांपल 2020 का ही लेते हैं, करीब करीब 1.25 लाख लोग जो हैं वो उनका केस उनके खिलाफ गया और उनको जेल हुई। लेकिन करीब करीब 3.25 लाख ऐसे बेचारे फंसे हुए हैं कोर्ट में, जिनका आज तक जो है फैसला नहीं हुआ है, ना उनको छोड़ा जा रहा है और ना उनको सजा हुई है। वो बस ऐसे ही फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? कोर्ट के पास टाइम नहीं है, कोर्ट के पास जजेस नहीं है, कोर्ट के पास लॉयर्स नहीं है जो उनका केसेस लड़के जो है या तो उनको सजा दे या तो उनको बरी करे। ये दोनों भी नहीं होता है, ना आदमी जी सकता है ना मर सकता है। ये बहुत ही बुरी हालत है। एंड यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम हु आर द पीपल हु गेट स्टक इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन? इट इज द पुअर पीपल, इट इज द माइनॉरिटीज हु गेट स्टक वेरी बैडली। हमारा कोई पुरसाना हाल नहीं होता है। हर बार कहीं दंगे फसाद होते हैं तो किसी को गरीब को पकड़ के ले जाके मूव देते हैं, एंड देन दैट फेलो इज नेवर एबल टू कम आउट। व्हाई? बिकॉज़ नोबडी टेक्स अप द केस। तो ये बहुत ही बुरी हालत है। तो मेरा कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि दिस इज वन एरिया दैट वी नीड टू एज ह्यूमन बीइंग, एज अ फाइटर हु वांट्स टू ब्रिंग द बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। इतनी बड़ी नाइंसाफी हमारे आंखों के सामने हो रही हो और हम इसके लिए कुछ ना कर पाए, ये बहुत ही बुरी बात है। तो इसके लिए जो है हम लोगों को एटलीस्ट जो बेकसूर लोग हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए, उसके लिए काम करना पड़ेगा। और उसके लिए काम कैसे कर पाएंगे? अगर हम लोग अच्छे लॉयर बनेंगे, हम लोग अगर अच्छे जजेस बनेंगे, तो वी विल बी एबल टू गेट इन द जस्टिस। तो जैसे लिखा 78% ऑफ द prisoners are languishing in 1300 prison without being proven to be criminals। देखिए मैंने जैसे बताया 80% लोग जो है, ज्यादातर बेकसूर लोग जो है वो जेलों में फंसे हुए हैं। दे नीड टू गेट आउट। एंड हाउ विल दे गेट आउट? अनलेस एंड until their discussions are discussed in the court। तो देयर इज अ फेमस सेइंग कॉल्ड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। काफी लोग हैं जो बेचारे इंसाफ को वेट करते करते दे डाई इन दी जेल्स। So I think that is very important thing that we should pick up from this, at least from this discussion that we are having today, that we should work towards getting justice for poor people, पुअर हेल्पलेस पीपल। पुअर मतलब मैं गरीब की बात नहीं बोल रहा हूँ, पुअर मतलब वो जो बेखुसूर फंसे हुए हैं। ओके, तो दिस वाज ऑन दी जनरल एडवोकेसी साइड पार्ट वाला है। अभी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, व्हिच इज नॉट गोइंग टू टेक मच ऑफ योर टाइम, इज द जुडिशियल सर्विसेज। ठीक है, पहले क्या होता था, लोअर जुडिशियल सर्विसेज होती हैं जहां पे एक लॉ ग्रेजुएट एनरोल्ड एज एडवोकेट, जैसे मैंने बताया आपको, वो बीसीआई का वो टेस्ट अगर करने के बाद में जो है आप लॉयर से एडवोकेट बन जाएंगे। एंड उसके बाद में एक टेस्ट होता है जिसको एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। एंड विद दैट एंट्रेंस टेस्ट यू कैन डायरेक्टली बिकम अ जज। पहले क्या होता था, आज से 10 साल या कुछ अर्सा पहले जो है, अगर किसी को जज बनना चाहिए था तो दे हैड टू वेट फॉर वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, मे बी 10 years 15 years ऑफ प्रैक्टिस इन दी कोर्ट एज लॉयर एंड एज एडवोकेट, एंड ओनली देन दे यूज्ड टू बिकम अ जज। बट आज वो फैसिलिटी है जहां पे आप जो है इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन यू कैन ट्राई टू बिकम अ जज। आई विल शो यू द एग्जांपल्स आल्सो। और ये जो है वो लोअर जुडिशियल सर्विस का है। जो हायर जुडिशियल सर्विस है ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसके अंदर जो है 7 साल जो है आपको एडवोकेट बनना है और उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, और वो टेस्ट में अगर आप पास कर जाते हैं तो आप हायर जुडिशियल सर्विस में जाएंगे। अगर आप डायरेक्टली विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी अगर आप जज बनना चाहें तो आप जो है लोअर जुडिशियल सर्विसेज में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू रियली रियली डू समथिंग फॉर द country, for the community, you can become a judge directly after completing your program। okay, जुडिशियल सर्विसेज टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? इसमें 3 स्टेजेस होती हैं। प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है जिसमें एमसीक्यू होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। स्क्रीन टेस्ट होता है, मार्क्स नॉट काउंटेड, मतलब ये क्वालिफिकेशन वाला होता है। प्रिलिमिनरी टेस्ट पास होने के बाद ही आप जो है मेन एग्जाम्स लिख सकते हैं। मेन एग्जाम जो है वो रिटन टेस्ट होता है, प्रिलिमिनरी जो होता है वो ऑनलाइन होता है। और उसके बाद जो है आपका पर्सनल फेस टू फेस इंटरव्यू होगा जो जनरल इंटरेस्ट और आपके इंटेलिजेंस को चेक करेगा। एंड देन इफ यू क्वालिफाई
you can become a judge without even going and practicing in the court. ओके तो ये हायरार्की है जो मैंने आपको बताया है. यू कैन बिकम अ डायरेक्ट जज हियर, सबऑर्डिनेट जज क्लास 2 वाला जो है, ये वाला जज आप बन सकते हैं बाय राइटिंग द टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स एंड कंप्लीटिंग योर बार वाला टेस्ट जो है, बीसीए वाला टेस्ट कंप्लीट करने के बाद. देन यू बिकम अ सबऑर्डिनेट जज क्लास 1 बनेंगे. जो हायर जुडिशरी सर्विसेज वाला मैंने बताया था. देन यू कैन बिकम अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज बन सकते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट जज बन सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जज बन सकते हैं. ये सारे के सारे जजेस बनने का जो सिलसिला चलता है वो मेरिट बेस्ड होता है. फर्स्ट टाइम जो है दैट इज ऑल्सो मेरिट, बट उसमें रिटर्न टेस्ट वगैरह होता है. उसके बाद जितने भी आपके ग्रेजुएशन होगी वो सारे के सारे जो है वो आपके मेरिट के बेसिस पे होगा. ये और एक छोटी सी चीज है माय फ्रेंड्स, एंड सिंस मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, आई थॉट इट इज वर्थवाइल टू शेयर. ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पुराना है, बट इट इज स्टिल नॉट चेंज अ लॉट. देखिए 43 सीजीआईज अब तक इंडिया में गुजरे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इंडिया में अब करंट जो है वो 47 है. ये इंफॉर्मेशन थोड़ा पुराना था. तो आप 47 आज तक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गुजरे हैं, उसके अंदर सिर्फ 4 मुसलमान चीफ जस्टिस तक बने हैं. सुप्रीम कोर्ट में 154 154 जजेस रहे हैं अब तक, उसके अंदर सिर्फ 10 मुसलमान जजेस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर. तो दिस इज वेरी वेरी लो माय फ्रेंड्स एज फार एज द कम्युनिटी इज कंसर्न. और रिप्रेजेंटेशन हाई कोर्ट्स के अंदर जो है देयर आर ओनली 26 जजेस इन हाई कोर्ट्स ऑल ओवर द कंट्री, व्हिच इज अगेन वेरी वेरी लो. Or whereas there are around 600 plus judges all over the country, and उसके अंदर सिर्फ 26 मुसलमान हैं. तो उसका मतलब आप जान सकते हैं कितने लोग हैं. So it is less than 5%, whereas our population is more than 50%. And it is a case with many other communities also. But this was one of the highlights which I wanted to sort of share, so that you think about it very seriously. Okay, let me share some examples, friends. It is not something that I'm asking which has not been done by anybody. ये बंदा है who is from Jaipur, and his name is Pratap Singh, Mayank Pratap Singh है, जो 2021 है, last year की बात है. 21 years old का youngest judge ever in the country. 21 years, and he is a judge of this country. And believe me, if he continues doing good work, सुप्रीम कोर्ट जाने में इसमें काफी देरी नहीं लगेगी. एंड इनफैक्ट इट डजंट हैव टू वेट फॉर 30-40 years. नेक्स्ट कपल ऑफ years he should be able to hit the सुप्रीम कोर्ट gardens also. कर्नाटका की एक लेडी है who became the first Muslim woman district judge last year. She again wrote the entrance examination and she has become a judge. So it is not something that is not possible. There are people who have done it, and I'm sharing they are all young people. There are other examples also. 39 Muslims cracked UP judicial services. 19 of them are Muslims. ये last year की news है. नहीं, sorry, 2019 की news है. और यहाँ पर right side में there are 23 Muslims become judges in Bihar, including 7 girls. और नीचे जो है 6 Muslims, 5 of them female, cracked Rajasthan judicial services exam. ये छोटे numbers हैं, but still they have done it. They have brought pride to the community, and I'm sure if many of us also plan to do it, and we should be able to bring laurels to the community and the country. Okay, fine. जैसे मैंने शुरू में एक स्टोरी आपसे शेयर की थी, मैं एक स्टोरी आपके साथ अभी भी शेयर करना चाहता हूँ. So how many of you would be interested in listening to this story? If you say yes, I will share the story with you. Please comment on the chat that you want to know the story. And this is again very very inspiring story. How many of you would like to know about this story? Okay, Zaid, Hasim Ali, Amatullah Wahid, Alhamdulillah. Very good, friends. That means you are really really interested. I'm talking about this person. So another person, his name is Shahid Azmi. I'm sure many of you would have heard about him. If not, that's okay, but you need not. See, this is a tragic story of a person. This person, his name is Shahid Azmi. He was falsely implicated. मतलब झूठा इल्जाम इनके ऊपर डाल के 15 साल की एज में जो है he was sent to jail. Then he came back because he was a juvenile. He was only 15 years, so they released him. After a couple of years, again he was sent to jail on a terrorist
मतलब false implication, terrorist के cases इनके ऊपर थोप दिए, and then he was sent to jail for 5 years. You know, he could have sat there and started crying, ये क्या हो गया मेरी जिंदगी, मेरे पर झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवा दिया, वो किया ये किया. But you know, this is the difference between a hero and an ordinary person. He said no. What he did was, in those 5 years when he was in the jail, he did his law education. He did his law LLB in the jail and wrote the examination and cleared LLB in the jail. करने के बाद he came out of the jail. He practiced law, and believe me, in 7 years he got acquitted 17 people who were falsely implicated in terrorist cases. जो टेररिस्ट थे नहीं, बेचारों को झूठा इल्जाम लगा के, जिनके ऊपर झूठा इल्जाम लगा के जिनको जेल भेजा गया, 17 लोगों को इन्होंने अकेले रिहा करवाया. इसमें ही हैड अ बिग. बट अनफॉर्चुनेटली आपको पता है क्या होता है, सच का साथ जो है काफी बार जो है वो महंगा पड़ता है. He was killed when he was only 32 years. 32 years में इनकी लाइफ जो है बिगिनिंग टू एंड हो जाती है. 15 साल में जेल जाते हैं, 23 साल में फिर जेल जाते हैं. He comes back, completes his LLB, fights cases. He is called as terrorist law, and he was a brave man, brave man. There is a movie also, if you want, you can just check it up. His name of the movie Shahid. तो आपको मूवी दिखेगी, इंडिया में मूवी बनी थी. Many people have seen. I have also seen. If you are interested, maybe you can have a look at it. ठीक है. ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्यों ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कुरान के अंदर भी है. तो चैप्टर 5 सूरह अनाम की आयत नंबर 8 है. इसका मैं इंग्लिश तर्जुमा सुना देता हूँ. इट सेज, ओ यू हु हैव बिलीव, मतलब है ईमान वालों, बी persistently standing firm for Allah, witnesses in justice, and do not let hatred of people prevent you from being just. इसमें काफी 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 जो है हुक्म है कि आपको हक के लिए लड़ना है, हक के लिए जो है आपको मुंह खोलना है, हक के लिए आप सपोर्ट करना है. बी जस्ट, दैट इज नियर टू राइचियसनेस. मतलब इंसाफ पसंद होना, हक पसंद होना, ये नेक बंदे की सिफात है. एंड फियर अल्लाह, इंडीड अल्लाह इज acquainted with what you do. मतलब अल्लाह ताला को मालूम है कि क्या है. Friends, we all of us want change. Now, as Gandhi ji says, be the change you wish to see in the world. हम लोग इंसाफ चाहते हैं, बट हम लोग इंसाफ में पार्टिसिपेट करना है, हमें इंसाफ को फरोग देना है, हमें इंसाफ को हेल्प करना है. Okay, so that brings to almost end of my presentation. I'm sure it would have had value addition to you. Now, I thank you for giving me, a patient hearing. I'm sure you would have learned a lot of things from me. And if there are any questions, inshallah, I will try and address those questions. Jazakallah. थैंक यू वेरी मच रफीक साहब. आपका सेशन बहुत ही अच्छा था. इट वॉज इंटरेस्टिंग. हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला था. दैट वॉज वेरी नाइस. आई एम श्योर पूरे स्टूडेंट्स को बहुत एंजॉय किया होगा एंड दे वुड हैव अंडरस्टैंड. तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे, वन ऑफ देम वांट्स टू नो, इज लॉ अ सूटेबल चॉइस ऑफ करियर फॉर गर्ल्स एंड कैन हिजाब बी worn? Yeah, as far as a law, a career is concerned, there is no restriction for hijab. It's not like a school or something. There is absolutely nothing like that in terms of hijab. But women, yes. In fact, we have one lady who became Chief Justice of this country also. I don't remember. Her name was Fatima something. Probably you can just check it up. Her name is Fatima something. She was a Muslim lady who was the Chief Justice of this country. So, I mean, we have in Karnataka High Court in Bangalore also, we have one lady who is the judge. And in fact, I shared one more profile with you sometime back. Who's Mumtaz hai, who became recently, that is, she became the district judge last year. So there are many such cases. So there is no restriction as far as ladies are concerned. In fact, ladies should participate in being judges and lawyers, because there are, देखिए, मैंने जो पहले भी आपको बताया था, what we call as rights and duties. Rights जो है किसके डिप्राइव होते हैं, किसके राइट जो है वो मतलब ओवरलुक होते हैं, किसको इंसाफ नहीं मिलता है.
या तो आप कमजोर होना चाहिए। अब कमजोर में कौन है? बच्चे होते हैं, या गरीब होता है, या औरतें होती हैं, इनके ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनको हाथ पकड़ने के लिए जो है, मेरी राय है कि लेडीज शुड कम फॉरवर्ड एंड देन टेक अप लॉ एज अ कैरियर। Sorry, Fatima Bibi, I think Khalil Bhai has written. So Fatima Bibi was one of the chief justices of the country, Supreme Court की judges रही हैं। Thank you, Khalil Bhai. The next question is, what is the difference between advocate and barrister? अच्छा, बैरिस्टर जो होते हैं वो यूके से पढ़े हुए होते हैं। जैसे आपने सुना होगा, गांधी वाज अ बैरिस्टर, और इवन जो एएमआईएम के चीफ हैं, असदुद्दीन ओवैसी, ही इज आल्सो कॉल्ड एज बैरिस्टर बिकॉज ही स्टडीड हिज लॉ फ्रॉम यूके। तो ये एक नेम है जो स्पेसिफिकली यूके में यूज होता है। सो एनीबॉडी हु इज क्वालिफाइड फ्रॉम यूके, they identify themselves as barrister. हमारे यहाँ जो होता है वो एडवोकेट होता है if he has qualified the BCI test, or else he will be known as a lawyer if he has done only LLB. Okay, so I have this question. If they study elsewhere, like UK में या कनाडा में पढ़ के आके, फिर अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना हुआ तो do they have to write any exam? Yeah, see, thing is, हर country का वही condition होता है। See, you need to have the local flavor of the legal, because what is there in other countries may not be same as what is there in our country. It may be different. That is the reason why we have this PCI test also. What I was mentioning about earlier, that you will have to clear the test, and only based on that, and also need to check, if the legal studies that has been done from somewhere else, whether it is accepted in this country. Because देखिए, इंडिया का अगर आप करेंगे तो हर जरूरी नहीं है हर कंट्री में उसका चले, मतलब इट इज गेट रिकग्निशन। सिमिलरली, इफ पीपल आर डूइंग इट फ्रॉम डिफरेंट अदर कंट्रीज, इट डजंट मीन दैट इट विल बी एक्सेप्टेड इन इंडिया आल्सो। सो यू नीड टू चेक टू थिंग्स। One is whether that legal education is accepted in India, one. Two, if it is accepted, even then you will have to write the BCI test, and then bar का टेस्ट जो होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, वो टेस्ट आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। बट अदर वे अराउंड, इफ दिस इज ओनली फॉर प्रैक्टिसिंग इन द कोर्ट, बट टू प्रैक्टिस आउटसाइड, जैसे मैंने कुछ कुछ आपको अच्छा, क्वेश्चन किसका था बाय द वे? सॉरी, ये anonymous user का था। Second question मेरा था। अच्छा, ठीक है। Because I had a question like That's okay. सोचा That's कि okay. बाकी के भी पूछे। That's okay. That's okay. That's absolutely okay. I was just out of curiosity, I was asking. देखिए क्या Yeah, होता है? Safwan has also added the same thing. Safwan Samsuddin ने पूछा है कि can we like learn law in foreign and practice here? Okay. So there are specialist law. Like for example, मैंने आपको जैसे बताया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ग्लोबल सीन है, मतलब देयर आर लॉज एवरीवेयर। डेटा प्राइवेसी जो है, इट इज अ ग्लोबल डेटा प्राइवेसी का लॉ जो है वो ग्लोबली एप्लीकेबल है। तो आपको अगर वहां कहीं से फॉरेन की अगर क्वालिफिकेशन है, दैट इज वेरी मच एक्सेप्टेड इन दिस कंट्री, because it is the firm that is going to use it, is not the कोर्ट में उसका कुछ यूटिलिटी डायरेक्टली नहीं है। आपको कोर्ट में जाके उसके बारे में कुछ लड़ना नहीं है डायरेक्टली, दैट कैन बी हैंडल्ड बाय समबडी एल्स, बट द नेटी-ग्रिटी इज पार्ट ऑफ इट। वो जो चीजें हैं, दैट यू कैन ऑलवेज सॉर्ट ऑफ सपोर्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल, कोई म्यूजिक कंपनी है, कोई मूवीज मेकिंग कंपनी है, वो कंपनी के अंदर जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के काफी जो है एक्टिविटीज होती हैं। देयर विल बी लॉट ऑफ स्कोप ऑफ डूइंग intellectual property related works. Now there is where these people who have foreign qualification will be very handy, because US में क्या है, UK में क्या है, यूरोप में क्या है, अफ्रीका में क्या है, that's very very important for somebody to know, because कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है अगर वायलेट होते हैं, उसका इम्प्लीकेशन यूएस में अलग होता है, इंडिया में अलग होता है। तो somebody has to have the awareness, what is going to be the implication in US, what is going to be the implication in India.
तो मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको साइबर लॉ है, साइबर लॉ इज एप्लीकेबल ग्लोबली एवरीवेयर, साइबर लॉ इज अ प्रॉब्लम इन द सेंस इट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर द वेल्थ ऑफ द सिटीजंस, अदरवाइज कोई यूएस में बैठ के या कोई रशिया में बैठ के या चाइना में बैठ के अगर हैक करता है तो इट बिकम इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट सिटिंग इन इंडिया। मेरा अगर कोई अकाउंट हैक करता है चाइना से, व्हाट विल आई डू? या आरबीआई का या कोई बैंक का अकाउंट हैक करता है, व्हाट विल आई डू? यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ए कोलैबोरेशन, एंड हाउ विल यू हैव कोलैबोरेशन? यू विल हैव पीपल हु विल कम फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ द लॉ फ्रॉम द अदर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके टॉक से एक इंस्पायर होकर they have written he is 58 years old and he wants to do LLB and also practice. So he is asking like क्या ये हो सकता है? हाँ, एलएलबी के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर। इनफैक्ट आज के जमाने में तो ये फैशन सा हो गया है। आई मीन आई नो मेनी ऑफ, इनफैक्ट आई हैव नॉट एन एलएलबी बट आई हैव शोन इंटरेस्ट इन लॉ। द प्रॉब्लम इज हम लोगों ने काफी चीजें जो है ओवरलुक की हैं। आई अप्रिशिएट दैट यू हैव इंटरेस्ट। इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट नॉट ओनली यू, प्लीज ट्राई एंड स्प्रेड द मैसेज अमंग योर among your generation next, wherever you have, because people have a very very different mindset towards the law. Law has been sort of a medical or an engineering profession today, maybe 50 years back, where everybody was only trying to become a lawyer. So everybody was trying to study law when Britishers were here in the country. So some of them were managed to do it, but others, couldn't do it. But there is no restriction as far as the practice is concerned. I showed you example of Ramjet Malani also. Till the last day of his life, he was a practicing lawyer. And I tell you, he was the highest paid lawyer in this country. Like, can you imagine a senior most person who's of 92 to 93 years age, still commanding the highest fees? One appearance, one day, 22 lakhs. ये मैं अपने से नहीं बोल रहा. Probably this is out of the discussion. You can Google it. So there is no restriction, sir. You can do LLB anytime. You can become member of the Bar Council of India by writing the test, and then you can practice. It's all open. LLB के कॉलेज की फीस कितनी होती है? Like वो डिपेंड करता है मैडम। देखिए ये जनरल क्वेश्चन होगा which is going to be very difficult. I don't want to throw a number because it is just like asking कॉलेज फीस कितनी होगी फॉर एग्जांपल बीए फर्स्ट ईयर। ये इंडिया में वेरी करता है। आप श्री राम में पढ़ रहे हैं कि हिंदूजा कॉलेज में पढ़ रहे हैं कि बैंगलोर में पढ़ रहे हैं, मुंबई में पढ़ रहे हैं, जेवियर्स में पढ़ रहे हैं, it's going to be it's not very difficult. You can always go and check on their website. You will get to know about it. It's not very costly also. जैसे क्लैट वगैरह में होता है तो लाख 1.5 लाख रुपए के करीब जो है वो फीस होती है नेशनल लॉ स्कूल में। But it is worth it because you are treated like Rajas once you come out of the national law school. At least the top 3, 4, 5 लॉ स्कूल से अगर कोई LLB डिग्री इंटीग्रेटेड 5 years का करके निकलता है तो he should be able to earn whatever is invested in his education in less than 6 months to 1 year, is what my understanding is. एनसीसी का कोई बेनिफिट है क्या लॉ में? देखिए कोटा अगर होता है तो होता होगा, बट एटलीस्ट नेशनल लॉ स्कूल के अंदर जो फ्लैट एग्जाम होता है उसके अंदर तो मैंने कभी एनसीसी का कोई, मुझे नहीं पता है कि अगर एनसीसी का कुछ कोटा होता है। यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट, अप्लाई फॉर टेस्ट। The next question is, I'm a recent graduate with a 5-year BA LLB from one of the reputed central government university and want to know that can I get your mentorship for getting a position as an in-house legal counsel in a law firm? Absolutely. That's very nice of you. Who is this? Mohammed Zaid. Acha, Mohammed Zaid, thank you very much for considering. See, sir, I have no problem in being your mentor. But thing is, I am not a practitioner. Tell you frankly, I'm not a practitioner because I'm not an advocate. I don't have an LLB also as a qualification. But जैसा मैंने आपको डेटा शेयर किया है, I carry a lot of pain for poor people. I carry a lot of pain for community people. So the only way I can do justice for all that pain that I carry in my heart is to share the information. So today what I'm doing is basically in that. Otherwise I come from engineering background. I'm a software professional.
So मेरा प्रोफेशन अलग है, but I keep very close tab on legal thing. But unfortunately, I'm tied up in the sense I can't do anything. I'm not in a situation like the other brother was saying that he wants to do LLB. For some reason, I don't think I will be able to do LLB now and then get into practice. So I would rather suggest, please hook on to somebody and then take the mentorship of people who are practicing. Probably they should be able to do justice. I will be more of an academic support. That is all I can say, but I don't have much of field exposure. The next question is, जुडिशरी में एग्जाम्स के लिए कोई स्ट्रैटेजी है क्या, like any tips? हाँ, देखिए जुडिशरी का, I don't know who is this person. तजवार हुमा. Okay, where is he from? Tajwa, हाँ. Tajwa Huma, Huma Tajwar. Sorry if I'm spelling it wrong. Tajwar Huma, आप कहाँ से हैं? Which state are you? Because that is Tajwar Huma. Are you able to hear me? Which state are you from? Okay, ठीक. ओके, आप कानपुर से हैं. वेरी गुड. देखिए, मैंने जैसे आपको बताया है, हाँ, वेरी गुड. सो होता क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है यूपी में भी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, विच विल बी कंडक्टिंग दी टेस्ट. जैसे मैंने आपको प्रेजेंटेशन में भी बताया था, कुछ लड़कियां हैं, 39 पीपल फ्रॉम उत्तर प्रदेश हैव क्लियर्ड दी जुडिशियल सर्विसेज. तो हर स्टेट जुडिशियल सर्विसेज का जो एमएल का टेस्ट होता है क्लास 2 मजिस्ट्रेट के लिए, वो वाला टेस्ट जो है वो स्टेट कंडक्ट करती है. तो जैसे मुंबई है तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश वगैरह. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वहां पे लोकल लैंग्वेज का होना जरूरी है, बिकॉज लोअर लेवल कोर्ट्स में जो कॉन्वर्सेशन होती है वो इसमें होती है, लोकल लैंग्वेज में होती है. तो वो होना जरूरी है. तो आपका जो सिविल सर्विसेज का जो सॉरी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टेस्ट भी होगा, उसके अंदर भी जो है काफी रिक्वायरमेंट होगा उसका. तो वो वाली चीज होती है. तो आपके में जितने भी लोग जो हैं वो जुडिशियल सर्विसेज टेस्ट लिखना चाहते हैं, तो यू गो टू योर रेस्पेक्टिव स्टेट. जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन आपके स्टेट में है, तो उनके यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको डिटेल्स मिल जाएगा. और उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है. स्ट्रैटेजी अलग मतलब प्रिपरेशन अलग होता है. जो राजस्थान में है या बिहार में है या उत्तर प्रदेश में है या कर्नाटका महाराष्ट्र में है, इसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है. टेस्ट का पैटर्न में भी अलग हो सकता है, डिफिकल्टी अलग हो सकती है. आप जो है एक स्टेट में पढ़ाई करके दूसरे स्टेट में जाके टेस्ट लिखना शायद डिफिकल्ट होगा, बिकॉज लोकल्स के लिए उसमें ज्यादा सपोर्ट होगा. वजह उसकी ये है कि लैंग्वेज का है. ये भी हो सकता है कि अगर जो हिंदी बेल्ट है, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार एंड ऑल दिस, they may have a common test which may allow people to write from other states. Like for example, मैं कर्नाटका से हूँ. अगर यहाँ पे कोई टेस्ट लिखना चाहता है तो he will need to have कन्नड़ा बैकग्राउंड. तो वो वाली चीज में जो है ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाते हैं. लोग फ्रॉम अदर स्टेट्स में नॉट बी एबल टू राइट. इफ समबडी इज फ्रॉम तमिलनाडु ऑब्वियसली और केरला, ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस रहेगा. बट स्ट्रैटेजी आपको मिल जाएगी, ऐसा कोई डिफिकल्टी नहीं है. आप गूगल करिए, मिल जाएगा. The next question is, what should I do to become a lawyer in Canada after 12? I have no idea sir. कनाडा में लॉयर होना तो आपको किसी कनाडा के कंसल्टेंट से पूछना पड़ेगा. Next is, kindly give info on doing LLB in Hyderabad, any open university. I'm already a graduate and PG. It is better in my case to go for LLB or judicial test. See, if you info on doing LLB, देखिए अगर आपने LLB किया है, that is required to write the judicial test. If you have not done your LLB, you cannot write judicial test. You cannot write also because you will have absolutely no idea, because judicial test जो होता है वो LLB का उसमें syllabus काफी होता है. So that is very much required. Both जो प्रिलिमिनरी होता है, मेन टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, हर लेवल में जो है आपको LLB का कंटेंट आपको पता होना चाहिए. So if you have not done your LLB, then you will have to do your LLB, only then you can think of judicial. If you have already done your LLB and if you are planning to do judicial test, Telangana में तो काफी options है, which are it should be good. What is the difference between a judge and a magistrate?
See, I don't see much of a difference between a judge and a magistrate. What I understand is it is interchangeably used. So typically at the lower courts, what we call as magistrates, and judges वाला जो नाम होता है वो normally जो है Supreme Court, High Court वगैरह में use होता है. So this is only my take. I don't have specific answer for this. And it doesn't matter. देखिए बिल्ली बिल्ली है चाहे आप वो white हो कि black हो, it doesn't matter. It should be able to catch a mouse. That is how I see. So whether somebody is called as a magistrate or called as a judge, I don't think it much of a difference unless until it carries some specific weightage, which I'm not very sure right away. Thank you, Rafiq. Can you share your email ID if you are comfortable with? Like, lots of people are asking for your phone number, so I do not want to disturb you much. So, an email ID, like if they are real serious, they can write in a mail to you if they have any queries. Okay, what I will do, I'll put my Twitter handle. So I use it is called as upright jurat. I will. Please write it on your chat box. Yeah, I've written it. So this is again have a tinge of law in this. So Okay. So everyone, if you have any queries, any doubts, you can always tweet him and at Upright Jurat, and I'm sure Rafiq Saab will be, more than happy to help you out. inshallah. And that was a very enlightening session, Rafiq साहब. आपने जो भी लोग शायद वो like crossroads में होंगे कि law करना है नहीं करना है, they would have felt very inspired by you. It gave like a lot of clarity about NLG, about judiciary, all these things. So I'm like really glad और बहुत शुक्रगुजार हूँ ANT के तरफ से कि आप आए हमारे साथ और इतना सारा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिया, शेयर किया हमारे साथ. Thank you very much. Thanks, AMP, also to giving me an opportunity to talk to the student, share my learning whatever I know, and I'm sure it would have had value to most of you. And I look forward for all of those people who have attended, and if they are, I'm sort of in a confusion to pick up, please do it. Do it not only for your sake. It is a responsibility as a human being, as a Muslim, to take up the responsibility and work towards the community and the country. And this is one of the noblest professions I see, which has a lot of challenges today. And unfortunately, it is only we and our community, and specifically all the other poor communities in the country, which are lacking in this. And the results are very, very clear in terms of they are getting impact. So thanks again for calling me and giving me an opportunity to talk. Thank you, one again. Assalamu alaikum. And thank you everyone for joining with us today. Our next talk is on careers on IIT and IIM on Monday. So log in at 5 p.m. again. So even that is going to be a very enlightening topic, and you will get much more information about it. And I understand you people have more questions, so please tweet him at Upright Jurat in a Twitter so that he will answer all your queries. Jazakallah khair.